We completed unit number 4. Name is wave shaping circuits, जिसमें हमने वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर्स, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स और भी हमने बहुत सारे टॉपिक उसमें स्टडी किए हैं। तो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने यूनिट 4 को कंप्लीट कर लिया था। Now in this lecture we will study about unit number 5. यूनिट 5 में हम स्टडी करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, क्योंकि यूनिट नंबर 5 जो है वो पूरी रिलेटेड है हमारी ओपैम्प्स से। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में हम ओपैम्प्स भी बोलते हैं। सो फर्स्टली वी डिस्कस द बेसिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. After this we will move the next topic is a differential amplifier. Next topic is equivalent circuit of an ideal operational amplifier. हम देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैसे होता है और कैसे हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प्स, जो अभी मैंने आपको बताया ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में हम ओपैम्प्स लिख सकते हैं। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स एंड आइडियलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर बैंडविड्थ. हम स्टडी करेंगे कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है और कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एग्जाम्पल्स. हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स से कि कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो वर्क करता है. And finally the references of this presentation. So in this lecture we cover all these topics one by one. So let's start with topic 1, the syllabus of unit number 5. तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमें स्टडी करने हैं यूनिट नंबर 5 में. सो यूनिट नंबर 5 जो रिलेटेड है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से. इसमें हम स्टडी करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक्स, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लू रेट्स, बैंडविड्थ, ऑफसेट वोल्टेज, बेसिक करंट एप्लीकेशंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समर, एवरेज, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, differential amplifiers, instrumentation amplifiers, log and anti-log amplifiers, voltage to current and current to voltage converters, comparators, schematic figure and active filters, 555 timer and its applications. तो इस वाले यूनिट में ये सारे टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं. Topic is the operational amplifier basics. The operational amplifier or op-amps in short, as they are more commonly called, are one of the basic building blocks of the analog electronic circuits. Operational amplifiers are a linear device that have all the properties required for nearly ideal DC amplification and are therefore used extensively in signal conditioning, filtering, or to perform the mathematical operations such as add, subtract, integration and differentiation. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन शॉर्ट क्या होता है? एक लीनियर डिवाइस होता है जो कि यूज होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने में, मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने में यूज हम इसका कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. सो व्हाट इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर? एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इन शॉर्ट ऑप-एम्प्स फॉर शॉर्ट इज फंडामेंटली अ वोल्टेज एम्पलीफाइंग डिवाइस. ये एक लीनियर डिवाइस है और एक वोल्टेज एम्पलीफाइंग डिवाइस है, डिजाइन टू बी यूज्ड with external feedback components such as resistor and the capacitor between its output and input terminals.
These feedbacks components determine the resulting function of or operation of the amplifier, and by virtue of the different feedback configurations where resistor, capacitor or both, the amplifier can perform a variety of different operations, giving rise to its name of operational amplifier. चूंकि इसमें हम रजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन लगा के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं by using this amplifier, so this is known as the operational amplifier. ऑपरेशन किस टाइप के, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ 3 टर्मिनल डिवाइस. तो पहले हमने क्या देखा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक लीनियर और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन डिवाइस है जो कि 3 टर्मिनल डिवाइस है, which consists of 2 high impedance input. One of the input is called the inverting input, marked with a negative or minus sign. The other input is called the non-inverting input, marked with a positive or plus sign. A third terminal represents the operational amplifier output port, which can both sink and source either a voltage or a current. In a linear operational amplifier, the output signal in the amplification factors known as the amplification gain, or we can say that amplifier gain, multiplied by the value of the input signal, and depending on the nature of these input and output signal, there can be 4 different classifications of operational amplifier gain. So the classification is, first one is a voltage gain, second is a current, third is a transconductance and fourth one is a trans resistance. तो पहला वाला जो होता है वोल्टेज, उसको हम लिखते हैं वोल्टेज इन एंड वोल्टेज आउट. करंट भी हमारा इन एंड करंट आउट. ट्रांसकंडक्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज इन होता है और करंट जो होता है वो आउट होता है. ट्रांस रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट इन होता है और वोल्टेज आउट होता है. मींस ट्रांस रेजिस्टेंस जो होता है वो ट्रांस कंडक्टेंस का अपोजिट होता है. सिंस मोस्ट ऑफ द सर्किट डीलिंग्स विद ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आर वोल्टेज एम्पलीफायर, वी विल लिमिट द ट्यूटोरियल्स in this section to the voltage amplifiers only, VN and Vout. The output voltage signal from an operational amplifier is the difference between the signal being applied to its 2 individual inputs. In other words, an operational amplifier output signal is the difference between the 2 input signals, as the input stage of operational amplifier is in fact a differential amplifier as so below. So this is all about the operational amplifier. हम देखते हैं differential amplifier क्या है. नाम से ही समझ में आ रहा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब जब डिफरेंस होता है 2 इनपुट के बीच में तभी ये एम्पलीफायर जो है वो काम करता है. द सर्किट बिलो show a generalized form of a differential amplifier with 2 input marked as V1 and V2. यहाँ पे हम देख सकते हैं V1 और दूसरा वाला हमारे पास V2 है, डायग्राम में देख सकते हैं. The 2 identical transistors TR1 and TR2 are both biased at the same operating point with their emitter connected together and return to a common rails VEE by the way of resistor RE. So this is the diagram for the differential amplifier. The circuit operates from a dual supply plus VCC and minus VEE, which ensure a constant supply. The voltage that appears at the output, the V out of the amplifier, is the difference between the 2 input signal. तो आउटपुट जो हमें मिलता है वो 2 इनपुट सिग्नल के डिफरेंस से ही मिलता है. सो दिस एम्पलीफायर इज नोन एज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर.
The V out of the amplifier is the difference between the two input signal as the two base inputs are in antiphase with each other. So, as the forward bias of the transistor TR1 is increased, the forward bias of the transistor TR2 is reduced and vice versa. Then, if the two transistors are perfectly matched, the current flowing through the common emitter resistor RE will remain constant. Like the input signal, the output signal is also balanced, and since the collector voltage emitter swing in opposite direction, or we can say that antiphase, or in the same direction, or we can say that in phase, the output voltage signal taken from between the two collector is, assuming a perfectly balanced circuit, the zero difference between the two collector voltage. This is known as the common mode of operation, with the common mode gain of the amplifier being the output gain when the input is 0. The operational amplifier also have one output, although there are one with an additional differential output of low impedance that is referenced to a common ground terminal, and it should ignore any common mode signal. That is, if an identical signal is applied to both the inverting and non-inverting inputs, there should be no change to the output. However, in real amplifiers, there is always some variations, and the ratio of the change of the output voltage with regards to the change in the common mode input voltage is called the common mode reduction ratio, or in short CMRR. ऑलरेडी हमने ये प्रीवियस वाली क्लास में स्टडी किया हुआ है. CMRR क्या होता है डिटेल मोड में. So the operational amplifier on their own have very high open loop DC gain, and by applying some form of negative feedback we can produce an operational amplifier circuit that has a very precise gain characteristics that is dependent only on the feedback used. Note that the terms open loop means that there are no feedback components used around the amplifier, so the feedback path or open loop is open. तो हमारे पास सिस्टम जो है वो ओपन लूप का मतलब इसमें हम कोई भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. An operational amplifier only responds to the difference between the voltage on its two input terminal, known commonly as the differential input voltage, and not to their common potential. Then, if the same voltage potential is applied to both the terminal, the resultant output will be 0. An operational amplifier gain is commonly known as the open loop differential gain and is given by the symbols of AO. क्योंकि हम गेन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, या तो हम इसको नॉट पढ़ लें या हम इसको स्मॉल o पढ़ लें. सो A नॉट पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा. सो A नॉट इज कॉल्ड दी ओपन लूप डिफरेंशियल गेन. The next topic is equivalent circuit of an ideal operational amplifier. So this is the equivalent circuit of an ideal operational amplifier circuit. एक्चुअली एम्पलीफायर सर्किट जो होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है. देखिए हम देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल 2 एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनल 3. मींस 2 इनपुट हमारे पास टर्मिनल होते हैं और एक जो हमारे पास है वो आउटपुट टर्मिनल होता है. सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और सेकंड वन इज कॉल्ड द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल. नॉन इन्वर्टिंग को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्टिंग को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो है इन दोनों इनपुट सिग्नल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे VDIF, है ना, V डिफरेंस. और ये जो होता है ये हमारा गेन होता है. और यहाँ से जो V आउट है यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा.
and this is the supply for the operational amplifier plus V or minus V supply. So this is an equivalent circuit of an ideal operational amplifier. चलिए इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं. ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स एंड आइडियलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो हमने अभी इक्विवेलेंट सर्किट देखा है उसी को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. So first one is known as open loop gain, जिसको हम बोलते हैं AV0. तो ओपन लूप वोल्टेज गेन फॉर आइडियलाइज्ड ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनफाइनाइट होना चाहिए. Means the main function of the operational amplifier is to amplify the input signal, and the more open loop gain it has, the better. Open loop gain is the gain of the operational amplifier without positive or negative feedback, and for such an amplifier the gain will be infinite, but typical real value range from about 20,000 to 2 lakhs. तो जो हमारा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका ओपन लूप गेन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए. इनपुट इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करेंगे Z से, वो भी हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए. तो इनपुट इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट एंड इज assumed to be infinite. To prevent any current flowing from the source supply into the amplifier input circuitry, IN is equal to 0. Real operational amplifier has input leakage current from a few picoampere to a few milliamperes. नेक्स्ट इज आउटपुट इम्पीडेंस, रिप्रेजेंट करेंगे Z आउट से. ये जो है आउटपुट इम्पीडेंस ये 0 होना चाहिए. The output impedance of the ideal operational amplifier is assumed to be 0, acting as a perfect internal voltage source with no internal resistance, so that it can supply as much current as necessary to the load. This internal resistance is effectively in series with the load, thereby reducing the output voltage available to the load. Real operational amplifier have output impedance in the 100 to 20 kilo ohm range. तो जो आइडियल चीज है उसमें तो 0 होना चाहिए आउटपुट इम्पीडेंस, बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट इज बैंडविड्थ, रिप्रेजेंट करेंगे BW से. बैंडविड्थ जो होती है वो भी इनफाइनाइट होनी चाहिए आइडियल एम्पलीफायर की, या हम बोल सकते हैं आइडियल होती है. आइडियल एम्पलीफायर जो है उसका जो बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होता है. So an ideal operational amplifier has an infinite frequency response and can amplify any frequency signal from DC to the highest AC frequency, so it is therefore assumed to have an infinite bandwidth. With real operational amplifier, or we can say that with practical operational amplifier, the bandwidth is limited by the gain bandwidth product, in short GB, which is equal to the frequency where the amplifier gain become unity. The next one is offset voltage, रिप्रेजेंट करेंगे हम VIO से. तो ऑफसेट वोल्टेज जो है आइडियल एम्पलीफायर का वो 0 होता है. So the amplifier output will be 0 when the voltage difference between the inverting and non-inverting input is 0. The same or when both the input are grounded, the real operational amplifier have some amount of output offset voltage. वैसे तो 0 होना चाहिए, बट जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है उसमें हमें कुछ अमाउंट ऑफसेट वोल्टेज का मिलता है. So from these idealized characteristics above, we can see that the input resistance is infinite, so no current flow in either the input terminal, and the differential input offset is 0. It is important to remember these two properties as they will help us
understand the workings of the operational amplifier with regards of the analysis and design of operational amplifier circuit. However, the real operational amplifier, or we can say that the practical operational amplifier, such as the commonly available is UA741, for example, do not have infinite gain or bandwidth but have a typical open loop gain, which is defined as the amplifier output amplification without any external feedback signal connected to it. And for a typical operational amplifier is about 100 dB at DC. This output gain decreases linearly with frequency down to unity gain or 1 at about 1 MHz, and this is shown in the following open loop gain response curve, जो कि अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखने वाले हैं. So the next is open loop frequency response curve. So this is the open loop frequency response curve. From this frequency response curve, we can see that the product of the gain against frequency is constant at any point along the curve. Also that the unity gain means 0 dB frequency also determines the gain of the amplifier at any point along the curve. This constant is generally known as the gain bandwidth product or GBP in short. Therefore, the gain bandwidth product in short GBT is equal to gain into bandwidth, or we can say that A into BW. For example, from the graph above, the gain of the amplifier at 100 kHz is given as 20 dB or 10. Then the gain bandwidth produced is calculated as GBP is equal to A into BW. So the value of A is 10 and the value of BW is 1 lakh. So we get the answer. Similarly, the operational amplifier gain at 1 kHz is equal to 60 dB or 1000. Therefore, the GBP is given as, so GBP is equal to A into BW, put the value, so we get the answer. The voltage gain AV of the operational amplifier can be found using the following formula. So this is the formula of voltage gain. Already हमने ये formula पहले भी स्टडी कर लिया है. तो वोल्टेज गेन को हम रिप्रेजेंट, गेन को एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और वोल्टेज है इसलिए हम इसको लिखेंगे AV. सो AV इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज. इसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेन. एंड इन डेसिबल्स और dB इज गिवन एज, अगर हमें इसको dB के फॉर्म में लिखना है, डेसिबल के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे 20 log A और 20 log V out by Vn in dB, or we can say that in decibel. The next topic is an operational amplifier bandwidth. The operational amplifier bandwidth is the frequency range over which the voltage gain of the amplifier is above 70.7% or minus 3 decibel, in short dB, where 0 dB is the maximum of its maximum output value as shown below. So in a diagram, you can see the frequency response. Here we have used the 40 dB lines as an example.
अभी हमने क्या किया, 40 dB लाइन को हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिया हुआ है. The -3 dB or 70.7% of Vmax down point from the frequency response curve is given as 37 dB. ठीक है, इसको हमने अगर देखा है, इस वाले पॉइंट को हमने लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है, 37 dB मुझे मिल रहा है. Taking a line across undulate intersect with the main GBP curve gives us a frequency point just above the 10 kHz line at about 12 to 15 kHz. We can now calculate this more accurately as we already know the formula of GBP of the amplifiers. So in this particular case, 1 MHz is the answer. Next is an operational amplifier example. Using the formula 20 log A, we can calculate the bandwidth of the amplifier as 37 is equal to 20 log A. Therefore, A is equal to NT log 37 divided by 20. So we get 70.8. GBP divided by A is equal to bandwidth. Bandwidth हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से. Therefore, put the values. So we get the answer 14,124 Hertz, or we can say that 14 kilohertz is the bandwidth. Then bandwidth of the amplifier at a gain of 40 dB is given as 14 kilohertz as the previously predicted from the graph. तो इस तरीके से हम जो है वो वोल्टेज गेन और बैंडविड्थ किसी भी एम्पलीफायर सर्किट का निकाल सकते हैं. अभी हमने इस केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो कर्व है, उस कर्व के थ्रू हमने वोल्टेज गेन और बैंडविड्थ को कैलकुलेट किया है. So next is the reference of this presentation. So these are the references. And thank you for watching this video.